Now, India and Chinese troops clashed in Nakula. सिक्किम बॉर्डर पर चीन अपनी दादागिरी से पीछे नहीं हट रहा। भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है कि वो चीन की दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिक्किम डायरीज। तो आज आप सिर्फ सिक्किम की वादियाँ ही नहीं, उसके इतिहास के पन्नों को भी देखेंगे। तो उम्मीद है आप सबको मजा आएगा। एंड कम जॉइन मी इन द जर्नी। Palace of Gangtok, King Tonduk Namgyal rules in name. India controls defence and foreign affairs, and this is resented by many Sikkim'S. And many still frown on the king's wedding 2 years ago to an American debutante, Miss Hope. एक और फॉल जाएंगे, फिर यक्सम जाएंगे, कांचनजंगा फॉल जाएंगे, फिर वो एक गार्डन है उधर जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा रावंगला, यक्सम से सीधा रावंगला। तो ये हमारा टूर है। तो let's go guys. I hope you all guys are also enjoying. Now in Pakistan, his first visit to the Indian subcontinent since his troops fought their brief sharp war with India 16 months ago. To the east of Karachi, two tiny states watch intently the Chinese leader's progress. They are Sikkim and Bhutan, wedged into the Himalayas between India and China. The Chinese offensive of 1962 just missed their borders. They know that if China were to move south again, they would be right in her path. Today, India controls its foreign policy and security, and Chinese-held territory is not far away by Himalayan standards. An institute of Tibetology was built after the Chinese conquered Tibet. It houses the documents and treasures the monks brought with them when they fled over the border. The foundation stone was laid by the Dalai Lama. The institute was then officially opened by Mr. Nehru. Inside, exiled monks ponder the Buddhist text which the Chinese have tried to discredit. Sacred objects from Tibet are preserved here, though the Sikkim'S form of Buddhism, the red-robed sect, differs from the reformed yellow-robed faith of the Dalai Lama's people. While the monks brood on the infinite or study their texts, some 7,000 of their people live very different lives in refugee camps near Gangtok. The world was briefly concerned about the plight of the Tibetan people when the Chinese invaded. Then the world turned to other disasters. Alright, so now we have reached to Orange Garden. So it's a riverfront. You can also put tent and stay here. So now you have to take ticket from here from uncle. So uncle, how much coins? Thank you uncle. Thank you. So now we are going to stay here in such height. It's almost about 2000 meters above sea level. फिर भी लोग कितने प्यार से, कितना साफ और environment को कितना ध्यान देके रहते हैं. This is really commendable. This is the orange tree, guys. Beautiful oranges. Wow. These are the tents. You can night stay here. हम लोग मुंबई के तरफ लोनावला जाके पावना लेक कैंपिंग करते हैं, कुछ उसी तरीके का है. In the Scottish Mission School at Gangtok, 30 miles from the Chinese outposts in Tibet, Sikkim'S children were singing this week of a great victory over the big red dragon. Here, last week, Chinese troops stood poised to attack as Peking delivered its ultimatum to New Delhi. के लिए क्या-क्या है आपके पास? सर ये ऑरेंज वाइन है, ऑरेंज वाइन, इलायची का वाइन है, रोडोडेंड्रन का वाइन है, रोडोडेंड्रन, अदरक वाला है, अदरक, चेरी का है. वाह वाह, वो वाला जूस है सर. वो जूस है, ये वाइन है, राइट? यस सर. वाह, वेरी नाइस. दिस इज ऑरेंज.
I'm hoping this one will be quite sweet. Sweet, very nice orange flavors, very nice smell. This one is like top. So if we rank, now it's orange, rhododendron. Let's put cherry above ginger. No, I will put ginger above cherry because ginger is strong. Okay. This is guava juice. This wine. is guava. Very nice. Fuyo, this is too good. Too good this is. This goes right to the top. This is the last one. This is also strong one, sir. This is also very strong. Grapes one also. Grapes. Which grapes? Green grapes? Yes, green grapes. Okay, this is Indian grapes wine. Let's see. Mostly wines are made of grapes, as you all know. Oh, this is very good. This goes right to the top, man. This is very good white wine. You can have a proper meal with this. Very good. So these are the wines which they have locally made, and you should definitely try this. Very good. Really enjoyed. Thank you, Uncle. The world of reality lies northeast of Gangtok, along a road that winds its way 14,000 feet up through the snowy slopes of the Natula Pass. It's one of the 13 main routes from Sikkim through the Himalayas to Chinese-occupied Tibet and to China itself. Here, last week, Chinese troops stood poised to attack as Peking delivered its ultimatum to New Delhi. But though all's quiet on the border now, Indian troops remain on the alert in the knowledge that the pass through Sikkim has now become another potential starting point for a third world war. Ceasefire or not, the threat of Chinese invasion, years older than the threat of communism, still hangs over Sikkim and its capital Gangtok. The king was accompanied to the front by the Indian political officer whose presence underlined the fact that Sikkim's future lies partly in Indian hands. Sir, can you tell me, how serious did you consider the Chinese threat to be this time? Well, we really didn't take the thing very seriously until the Chinese sent in a sort of, you might say, ultimatum. rimbi na rimbi jabo na আমরা যাব হচ্ছে ইয়কসুম এদিকে পাক্কা তো अभी आप लोग यहाँ पे है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे है यक्षम स्कूल के पास. हाँ, यक्षम स्कूल से थोड़ा आगे ये नंबर 4 में ऐसा है. सो यहाँ से ऊपर में भी एक मोनास्ट्री है और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है. और पर ये से आप इसे स्ट्रेट जाइए, ऐसे जाके यहाँ पे एक मोनास्ट्री है, यहाँ पे एक लेक है. सो दिस इज द लेक कातोक लेक. सो यू हैव बीन टू खिचपरी लेक? No, Katok Lake, and there is another lake. It's a husband and wife. This is husband. Okay. So here's also a beautiful place. You can just husband go is around. beautiful. Yes. And if you go little bit, यहाँ से थोड़ा up का रास्ता है. तो यहाँ पे कोरोनेशन थ्रोन है, जो सिक्किम का हिस्ट्री है. किंग का. हाँ, किंग का. 3 लामा योक्सम means meeting place of 3 lamas. 3 lamas. Yes. Okay. So he came here. They came here and they select the king. आके यहाँ पे history of Sikkim begins हुआ है यहाँ से. So you must visit. Nobugan. Yes. यहाँ पे visit करो, नीचे आओ, लेक visit करो, और यहाँ से एक हेलीपैड है. यहाँ पे जाके आप अच्छा सा व्यू है. So यहाँ से ट्रैकिंग चला जाता है. जो योक्सम से कंचनजंगा का ट्रैकिंग वर्ल्ड का नियरेस्ट ट्रैकिंग रूट है. तो गोचेला एंड कंचनजंगा के रूट के लिए है. सो एक आपको यहाँ पे डुगडी गुम्पा है. हाँ, और ये तो थोड़ा अब ऐसे घूम के यहाँ तक रोड जाता है, यहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है. सो दिस इज द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री ऑफ सिक्किम. यू कैन विजिट ऑल्सो, यू कैन गो अराउंड ऑल्सो. सो दिस इज द प्लेस.
you can visit in Yoksan. हम अभी आ चुके हैं नोबुगैंग में, नॉर्बुगैंग। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सिक्किम स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली जो 3 लामाज थे इस एरिया के, उन लोगों ने जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रांड को बनाया था, वैसे ही अपना डिस्कशन करके द फर्स्ट किंग ऑफ सिक्किम was crowned here. Yeah, so little historical, nice. And they were actually spread out in attack formation. How far did they cross into your own territory? They came about 200 yards on one occasion, and of course they went back again. Why was this? To provoke the Indian forces into firing, do you think? I think it was to provoke the Indian army. I must say that the Indian army have been very patient with them. Buddhism is the state religion of Sikkim. It has 67 monasteries within its borders, but many Sikkimese may now wonder if their peace-loving religion can protect them against the threat from the north. They feel anxiously instead that their ultimate liberty rests in the hands of the troops who face each other across the snow-bound border. अभी जो घटनाएं आपने देखी वो 1970 के इंडो चाइना वॉर के आसपास के घटनाओं पर आधारित था। जैसे कि आप जानते हैं कि सिक्किम एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करती थी, उनका अपना फ्लैग था और उनका जोग्याल का डायनेस्टी था उधर। और लेकिन 1950 में सरदार वल्लभ भाई चाहते थे कि वो पूरी तरह इंडिया में सम्मिलित हो जाए, लेकिन नेहरू जी बढ़ते तनाव को देख के ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और चाइना के बीच में और स्थिति गंभीर हो, तो उन्होंने उनके साथ 1950 में इंडो सिक्किम फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया, जबकि इंडिया उनका प्रोटेक्टोरेट बनता और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स देखता और बाकी सारे मैटर्स उनके राजा के पास ही रहती। तो ये काफ़ी समय तक चला जब तक इंदिरा गांधी नहीं आई। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो उधर बहुत ज़्यादा एजिटेशंस बढ़ रहे थे और उसी वक्त इंडिया में रॉ का भी गठन हुआ जो कि RN राव ने किया था और उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर प्लान बनाया और कैसे रॉ ने सिक्किम को इंडिया में सम्मिलित किया। ये आप मैं लिंक डाल दूंगा, उन वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। और इसके बाद आर्टिकल 371F लाया गया और तब से सिक्किम इंडिया का एक अभिन्न अंग है। जहाँ बच्चा स्टारली, जहाँ कंचनजंगा से, यही हो हाम्रो धनको देश, तपोवन हो प्यारो सिक्किम। जहाँ बच्चा स्टारली, जहाँ कंचनजंगा से, यही हो हाम्रो धनको देश, तपोवन हो प्यारो सिक्किम। फुल्छन् यहाँ आँगनैमा, चाँपो गुलास सुना। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया एपिसोड तो लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ साथ बेल आइकन भी दबा ही देना। और अगर आपने सिक्किम डायरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, दे आर ऑसम एपिसोड्स। एंड मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में जो कि सिक्किम डायरीज का लास्ट एपिसोड होगा। तो सी यू देयर, तब तक के लिए बाय बाय।